ओके जी, अभी जो है ना हम जो कर रहे हैं रिवीजन पार्ट, वो है सब्जेक्टिव टाइप जो नो योर वर्ड का हमारा फर्स्ट टर्म का है, जिसमें यूनिट 4 का चैप्टर 7 है लॉन्ग लॉन्ग अगो। यूनिट 5 के हैं चैप्टर 10, 11 और 14। इसमें ग्लोब्स एंड मैप्स है और कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन है। इसमें मैंने सारी जो है ना इंक्लूड कर दिए हैं, सो दैट आप एक ही दफ़ा एक ही गो में इनको सबको रिवाइज कर सकें। ठीक है जी। मैंने ये सारी उनकी एक्सरसाइजेज जो हैं सारी वो कर दी हैं। जो आपको लिए बड़ा एक एडवांटेज है कि फ़ायदा भी है कि आपके जो इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस जो है उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज आपकी जो लर्निंग चेक्स में आम तौर पे चीज़ें ये नहीं होती जो कि इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस में होती हैं। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, सो यू कैन गो ऑन एंड जो है ना जस्ट लिसन टू ऑल दिस थिंग्स। एक दो तीन दफ़ा करेंगे आपको इंशाल्लाह जो है ना ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक जगह कंसोलिडेटेड है, आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, एक ही जगह मैंने इकट्ठी कर दी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। Okay, friends, now we will do the learning checks. First of all, let me tell you one thing. In this subject, you might be thinking that the questions being asked have very long answers. In fact, once you think they are long answers, they are not long answers. You are required to explain. Uh, till the time you will have the writing practice, you cannot explain or you cannot write. सो मेरी एडवाइस आपको ये है कि वनेवर जब आपको ये आंसर्स नज़र आते हैं, आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा इनको लिखें। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। इफ़ यू नॉट हैव द राइटिंग प्रैक्टिस, you will not be able to remember and you will not be able to write. So you have to have the writing practice. You must practice, practice and practice. देर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। तो आप लोगों ने जितनी दफ़ा इसको लिख सकें इन क्वेश्चंस को, दैट विल बी नाइस, ओनली दैट विल हेल्प यू। अदरवाइज आपका जो है ना मसला ही बना रहेगा, आप हर वक्त भूलते रहोगे, आप इनकम्प्लीट आंसर्स लिखा करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड read carefully, and then once you are required to answer some question, you should read the question very carefully and then reply it very carefully and in complete. But that you can do only if you have read your um, book or syllabus and you have practiced it. Okay, so let's go to, first of all, let's go to the learning checks. Explain the use of the letters AH, BCE and CE. Now look at this question. This is very very easy question. All of you must be knowing AH means after Hijri, BCE means before Common Era, and Common Era means what? Common Era means it is the time of the birth of the जीसस क्राइस्ट, हज़रत ईसा जिनको बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, उनकी टाइम ऑफ बर्थ जो है दैट इज़ नोन एज सीई, और बीसीई जो है टाइम बिफोर दैट, और ए एच मीन्स आफ्टर हिजरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की थी, तो उसके बाद से मुसलमानों ने एक कैलेंडर शुरू किया था जिसको हिजरी ईयर बोलते हैं। तो ए एच मीन्स द टाइम आफ्टर द होली प्रॉफिट, पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। ठीक है जी। सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन एंड यू मे राइट इट इन अ बेटर वर्ड्स। आप इसको बेहतर अल्फाज में भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए लिख रहा हूँ, राइट? ओके, ए एच मीन्स number of years after Hazrat Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, migrated from Mecca to Medina. BCE means before Common Era, and CE means Common Era of years since the birth of Common. CE means Common Era. It is the number of
years after the birth of Jesus Christ. ठीक है जी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. ओके, नेक्स्ट इज what what do archaeologists do? How does their work help historians? First of all, let's see how do you spell this word. Archaeologist, 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 archaeologist. And if you will make the parts of the this word, and then you will be able to remember the spellings. R K A R C H A E, archaeologist, archaeologist, archaeologist. What do archaeologists do? How does their work help historians? Archaeologists are the people who do the excavations at certain places where they think that there can be something buried. Archaeologists वो लोग होते हैं कि जो रिसर्च करते रहते हैं, और उनको जब पता लगता है कि किसी ऐसी जगह पर उनको पता लगता है कि जब उनको ये थोड़ा सा यकीन होता है कि या शक पड़ता है कि इस जगह पर कोई पुराने ज़माने की चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें खुदाई करके मिट्टी के नीचे से उसको निकालने की कोशिश करते हैं. सो हु आर आर्कियोलॉजिस्ट? दे आर द पीपल हु डू द एक्सकेवेशंस. एंड हाउ डज देयर वर्क हेल्प हिस्टोरियंस? हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री लिखते हैं उनके पास प्रूफ्स आ जाते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जब एक्सकेवेशन करके कोई चीज़ निकालते हैं तो देन वी डू देयर केमिकल एनालिसिस. एंड इन दिस वे केमिकल एनालिसिस के बाद क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनकी जो थ्योरी हमें उन्होंने बताई होती हैं वो जो है ना प्रूव हो जाती हैं. ठीक है, सो इसका सिंपल आंसर तो ये होगा, द आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड द ओल्ड प्लेसेस बाय डिगिंग. विद देयर हेल्प द हिस्टोरियंस कैन प्रूव देयर थ्योरीज. यानी हिस्टोरियंस ने कहा हुआ ना जी फलां जगह ये होता था, फलां ये जगह होता था, अब इसका साइंटिफिक प्रूफ हो गया क्योंकि केमिकल एनालिसिस होता है उसका चीज़ का, और इट कैन बी प्रूवन. ठीक है जी. So in simple words, the archaeologists find the old places by digging. With their help, the historians can prove their theories. Okay, आ गया अभी समझ में. अब इसको 2-3 दफ़ा लिखेंगे तो इट विल बी बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रहेगा सारी ज़िंदगी. ओके, पहले क्वेश्चन को देखें कि व्हाट डू द आर्कियोलॉजिस्ट डू, हाउ डू दे हेल्प द हिस्टोरियंस. तो ये इसका आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले ज़रा क्वेश्चन को पढ़े ना ज़रा. क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स. यानी बहुत पहले इंसान बहुत पहले जो वो कैसे रहते थे. अच्छा, ये हमें पता है वो बेचारों को आग जलाने के लिए भी हमारे उनके पास फॉसिल फ्यूल्स वगैरह या दूसरे फ्यूल्स भी नहीं थे. तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि वो अपनी पत्थरों को रगड़ के आग बनाते थे, और फिर उनके पास कोई ना को कुकिंग का अरेंजमेंट था ना इतने अच्छे वेपन्स थे, तो वट एवर दे कुड फाइंड दे वुड ईट दैट. तो इसका सिंपल से मैंने आंसर ये लिखा है, दे मेड फायर विद रबिंग स्टोन्स. They had very less tools and tools made of stone, wood and animal bones. यानी उस वक्त तक उन बेचारों के पास इतने ज़्यादा टूल्स भी नहीं होते थे ना कोई वेपन्स होते थे. तो व्हाट दे वुड डू कि कोई स्टोन का या वुड का या एनिमल बोन का कोई जो होता है उसका टूल या वेपन बना लेते थे. एंड दे वुड ईट एनीथिंग दे कुड हंट. यानी किसी भी चीज़ का शिकार कर लेते थे तो उसको वो खा लेते थे. ठीक हो गया जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि लिस्ट द इन्वेंशंस ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया. ठीक है, अब ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लंबा है, मगर आपने इसको बार बार पढ़ेंगे. इनफैक्ट आपको पता चलना चाहिए जो डेली की चीज़ें हैं उनमें से आपको पता चलना चाहिए कौन सी चीज़ें कौन सी सिविलाइजेशन ने की थी. इस क्वेश्चन का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ ये आपको बताना है कि आप अलग अलग करके देख सकें कि कौन सी सिविलाइजेशंस ने कौन सी जो है इन्वेंशंस की थी. तो वही अभी हम देखते हैं क्या इसका
कि इंडस वैली की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन क्या थी, एक सिटी प्लानिंग, फिर सिटी प्लानिंग एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, प्लान सिटी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडस वैली का तो हो गया। इजिप्ट जो है, इजिप्ट वाले क्या करते थे, दे इन्वेंटेड ऑक्स ड्रॉन प्लो, यानी जो बैलों की मदद से जो हल चलाने का तरीका था वो उन्होंने दरियाफ्त किया था। फिर सिकल ऑफ हार्वेस्ट उन्होंने बनाया था, मिल्स फॉर ग्राइंडिंग उन्होंने बनाई थी, हेरोग्लिफ्स उन्होंने बनाया था, पपायरस फॉर राइटिंग उन्होंने बताया था, कैलेंडर एंड क्लॉक उन्होंने बनाया था। ये तो इजिप्शियंस का हो गया। ये सारी चीज़ें आज भी नज़र आती हैं, पर हमें पता होना चाहिए किसने क्या इन्वेंट किया था। मेसोपोटेमियंस, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, राइटिंग ऑन क्ले, ठीक है, व्हील, सन डायल क्लॉक, प्लोड लैंड, उन्होंने लैंड को प्लो करना सीखा, जो है ना सीखा था, सेल बोट्स, मैप्स, रिटन लॉज एंड काउंटिंग। ठीक है जी। ये अभी जिन जिन लफ्ज़ों को, नए लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इनके स्पेलिंग्स याद करें, इनको डिक्शनरी में देखें, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से इसको डिस्कस करें। ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू नॉट नो तो फिर आप बाद में आपके लिए मुश्किल होगी। ठीक है, आपको यू मस्ट रिमेंबर दीज क्वेश्चंस बाय राइटिंग याद करने से खाली नहीं होता, यू शुड राइट करने से फ़ायदा होता है कि याद भी हो जाता है और आपको लिखने में भी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what led to the discovery of Mohenjo-daro, in which provinces are each of these civilizations located? हड़प्पा एंड सिंध। हड़प्पा जो है इट इज़ लोकेटेड इन पंजाब, और जो मोहनजोदारो है इट इज़ लोकेटेड इन सिंध। वेरी सिंपल, हड़प्पा इन पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो एंड व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड? इसका सिंपल सा आंसर है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स। ठीक है जी, जो बरतानिया के थे ना, ब्रिटिशर्स जो थे, उनके आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ठीक हो गया ना जी। अब हम आ जाते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस। मोहनजोदारो इज पार्ट ऑफ द, it is part of the what? It is part of the Indus Valley civilization and now it is in Sindh province. ठीक है, it is in Sindh province but it was part of the Indus Valley civilization. इन दोनों चीज़ों में से आप जो भी लिख दें ये ठीक है, और दोनों लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, कंप्लीट आपका आंसर होता है। मेहरगढ़ वॉज एक्सकेवेटेड इन वन, मेहरगढ़ कब एक्सकेवेट हुआ था, याद करें अपनी। मेहरगढ़ वॉज एक्सकेवेटेड इन 1976। ठीक है जी। और द स्वां वैली सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू व्हाट? स्वां वैली की सिविलाइजेशन जो है, उन्हें पढ़ा है ना कि ये कितनी पुरानी है। इट डेट्स बैक टू द स्टोन एज, ये बहुत पुरानी है, जो स्टोन एज में ये किसे है। ठीक है जी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, द इंडस वैली पीपल यूज टू ट्रेड विद होम? मेसोपोटेमिया, मेसोपोटेमिया के साथ दे यूज टू ट्रेड, आपने पढ़ा है इसमें। ठीक है, इन योर ओपिनियन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड बिकॉज, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस केम एंड दे किल्ड देम, कुछ लोग कहते हैं बिकॉज ऑफ द रिवर्स और बिकॉज ऑफ द फ्लड्स उनको कहा जाता है। मेरे ख्याल से दे वर डिस्ट्रॉयड बाय बिकॉज ऑफ द फ्लड्स। अब यू में से आपका आंसर ये भी हो सकता है कि दे वर किल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ देयर प्लेस बाय द आर्यंस, बट मैं समझता ये हूँ कि दे वर द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंडेड बिकॉज ऑफ फ्लड्स। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेट बैक्स टू, हड़प्पन सिविलाइजेशन कब, कितनी पुरानी है, याद आया आपको?
2500 BC। ठीक है ना जी, ये तो आपको बिल्कुल दिया हुआ है बुक में। अच्छा, अब ये एक आपने देखो क्वेश्चन पढ़ा ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो है ना किससे करते थे, आपस में ट्रेडिंग करते थे, हैं, करते थे इंडस वैली वाले मेसोपोटामियन के साथ। यहाँ पर ये दिस एंड दैट सिविलाइजेशंस ट्रेडेड विद ईच अदर, तो ये वही आ सकता है, इंडस वैली एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस ट्रेडेड विद वन अनदर। ठीक हो गया जी। सो हमने ये आज ये आंसर शीट हमने कंप्लीट कर ली है, बट यू मस्ट रिमेंबर कि इसमें घबराना वाला नहीं है, आपने बड़े आराम आराम से इनको करना है। क्वेश्चन 4 स्पेशली थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, मगर इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन 4 में आपको समझाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें किन किन सिविलाइजेशंस ने इन्वेंट की थी। अगर इनको और से एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, इसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक दफ़ा लिखेंगे आसान होगा, दूसरी दफ़ा लिखेंगे और आसान होगा, तीसरी दफ़ा लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू। राइट, सो what I have learned, and you may add or reduce something in that. I think the question's answer is the answer of the question is that a globe is a model of the earth and is also a kind of a map. It shows whole earth in a small place, so it can't give large amount of information. It is difficult to carry a globe. A map is a drawing of earth seen from directly above. It can show a large amount of information because it can be of a country, city, or even a town. It is easier to carry a map, right? So a globe is a model of Earth and it is also a kind of a map. It shows whole Earth in a small place, so it can't give large amount of information. It is difficult to carry a globe. A map is a drawing of Earth seen from directly above. It can show a large amount of information because it can be of a country, city, or even a town. ठीक हो गया जी। Now we go over to our second question. Second question is that how is a globe different from a map? Before reading the answer that I have written, just imagine in your mind that how is a globe different from a map. आपने पढ़ा है ना कि मैप और ग्लोब में फ़र्क क्या होता है, कि ग्लोब में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि ग्लोब जो है एक राउंड शक्ल का एक बॉल सा होता है जिसके ऊपर सारी दुनिया का नक्शा बना हुआ होता है। मैप जो है वो किसी भी जगह का हो सकता है, एक शहर का हो सकता है, एक मकान का हो सकता है, एक महल्ले का हो सकता है, एक कंट्री का हो सकता है और इवन पूरी दुनिया का हो सकता है। ठीक है, और ग्लोब जो होता है ज़रा भारी होता है, उसको इधर से उधर ले जाना मुश्किल होता है। मैप क्योंकि कागज़ से बने होते हैं उनको बना ले जाना इधर उधर आसान होता है। सो इसका आंसर कुछ इस तरह बनता है कि अ ग्लोब शोज होल अर्थ इन स्मॉल स्पेस, सो इट कांट गिव large details, while a map can show a country, town, or even a smaller place, hence it can show a lot of details. ठीक है ओके जी, ये बहुत अच्छा हमें जवाब मिल गया। यानी कि हमने देख लिया कि ग्लोब जो है क्योंकि पूरी अर्थ को दिखाता है, सो इसमें सारी डिटेल्स नहीं हो सकती, जबकि मैप जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरी अर्थ का हो, वो किसी अर्थ का भी हो सकता है, एक कंट्री का भी हो सकता है, एक सिटी का भी हो सकता है, एक टाउन का भी हो सकता है, इवन अ स्ट्रीट या एक घर का भी हो सकता है। सो अ मैप कैन शो यू मोर डिटेल्स। ठीक है जी। The next question is describe the concept of bolts for reading maps. ये आपने याद है ना पढ़ा है, bolts जो है, bolts क्या था, थोड़ा सा जेहन में लाएं। What was bolts? Bolts means border, orientation, और क्या था, legend,
टाइटल एंड स्केल। ठीक है ना, यही था ना, बोल्ट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करते जाएंगे। bolts, B stands for the borderline, O stands for the orientation or the direction of the map, L stands for the legend or the symbols drawn on a map, T stands for the title or title of the map which tells us that what is this map about, S stands for the scale. The scale is used to calculate the actual area of land or a water body. ठीक है, ये कोई समुंदर हो या खुश्की हो, उसके लिए हम स्केल बनाते हैं ताकि हम बड़े सारे एरिए को छोटे कागज़ पर बना सकें। ये स्केल हमने बनाया होता है, जैसे हमने शो किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, और वट एवर हमारा जो अपने कागज़ के मुताबिक या उस एरिए के मुताबिक हम अपना स्केल बना लेते हैं। ठीक है, सो बोल्ट्स भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है ना जी, बड़ा इजी इजी मैंने लिखा है। बी स्टैंड्स फॉर बॉर्डर लाइन, ओ स्टैंड्स फॉर ओरिएंटेशन, एल स्टैंड्स फॉर लेजेंड, टी स्टैंड्स फॉर टाइटल एंड एस स्टैंड्स फॉर द स्केल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है वाई आर सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप। वाई आर सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप? Symbols on a map tell us the detail about the things and help us find the things on a map. बड़ा सिंपल सा है, सिंपल। symbol on a map tell us the details about the things and help us find the things on a map. बड़ा सिंपल सा है ना, 1.5 लाइन का जवाब आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजेंड ऑन अ मैप? लेजेंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है मैप में? ठीक है, सॉरी, ये तो सिक्स्थ का आ गया। मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप अकॉर्डिंग टू हिज एक्चुअल एरिया। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप अकॉर्डिंग टू हिज एक्चुअल एरिया। हम लेजेंड अखीर पे देखते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये अभी हमारे पास एक आ गया। गिवन द मैप स्केल 1 to 100, that is 1 centimeter on the map equal to 100 kilometer on the ground, work out the real distance between the two cities that are 5 centimeter apart on the map। ये हमने देखना है। अब कोई दो जो है ना, फुट स्केल से आपने दो करके देखना है, तो उससे आपको पता चलेगा कि 2 सेंटीमीटर जो है जगह, मैंने अभी जो है ना करके देखा कैलकुलेट, जो है ना कि 5 सेंटीमीटर कौन सी जगह है। मुझे तकरीबन लग रही थी कराची और सक्खर, और भी बहुत से कर सकते हैं आप। तो ये तकरीबन 500 किलोमीटर्स बनता था। तो ये मैंने ये वाला ड्रॉ किया, देखें ये वाला, और इसको ये तकरीबन इट इज़ 500 किलोमीटर। ठीक है ना जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लुक एट द टाइटल ऑफ द गिवन मैप, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द मैप? यूजिंग द लेजेंड राइट द नेम्स ऑफ द मेजर सिटीज कनेक्टेड बाय रेलवे एंड रोड ऑन द मैप। ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो एक सिंध का हमें बताया हुआ है, इसमें देखें जो डॉटेड लाइन्स ही ना, स्क्वेयर स्क्वेयर वाली, देखें ये रेलवे की लाइन जो है कैसे शो की हुई है, ये देखें, और रोड जो है ये शो की हुई है। दैट मीन्स ये रोड है, ये राइट, और रेलवे जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। अब हम देखते हैं कि जी रोड किन किन जगहों को टच कर रही है। ये देखें, रोड टच कर रही है कराची को, हैदराबाद को, और मुंजडारो को, और सक्खर को। ठीक है, अब हम देखते हैं रेलवे लाइन किन किन जगहों को टच कर रही है। रेलवे लाइन कराची को, हैदराबाद को, नवाबशाह, सक्खर और ऑनवर्ड चली जाती है। सो आप इन नामों को आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी गो टू दी
learning checks. The first question we come across is which countries share the borders with Pakistan? That means which are the neighboring countries of Pakistan, right? So Iran, Afghanistan, India, and China share the borders of Pakistan. Iran, Afghanistan, India, China, they share the borders of Pakistan. It's very simple. Okay. And going over to the next question, which is what is the importance of the location of Pakistan within the continent of Asia? Since Pakistan is near two super powers, that is China and Russia, its location is very important. Moreover, it is a trade route between Middle East and the Asia. There are two things. One thing is that Pakistan is located near China and Russia, right? And that is why its location is very important. And then, moreover, it is a trade route between Middle East and the Asia, right? The next question is that which regions did the Silk Route connect? You remember we studied in this chapter that there was an ancient and very important route that was known as Silk Route. This route connected what? This route connected Europe and Asia. Silk Route in fact connects Europe and Asia. Silk Route connected Europe and Asia. Okay? Right. The next question is again about the Silk Route. Where is the Karakoram Highway located? It has been built on the ancient Silk Route between Pakistan and China. It has been built between Pakistan and China, and it has been built on the same Silk Route which was there in from very far ago, right? Right. The next question is what is a landlocked country? Before just reading over to the question, you should remember the landlocked, yani a country which has been locked by land from every side, which has been locked by land, right? So it's very easy to say that a country surrounded by land on all sides is called a landlocked country. A landlocked country, right? A landlocked country is a country surrounded by land on all its sides. Okay? Right. The next question is that how does Pakistan help its landlocked neighbors? Pakistan has many neighbors which are landlocked. For example, um, there is an example of Afghanistan, and to a certain extent the northern part of China. So simply we can say that it helps them by providing them access to the sea route. It helps them by providing them access to the sea route. Okay. Right. Next is that what is meant by CPEC? CPEC, CPEC. How will Pakistan and its neighboring countries benefit from CPEC? CPEC means China Pakistan Economic Corridor. Okay, we read it already. It will give access to many countries to the seaport of Gwadar and give them benefit of easy and cheap trading route. इट्स वेरी सिंपल यानी हम अगर उनको उधर से गुजरने देंगे समुंदर के रास्ते तक जो लैंड लॉक कंट्रीज़ होंगे तो वो उनको चाइना को और अफ़गानिस्तान और बाकी जो एशिया के मुल्क होंगे जो लैंड लॉक हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा. सो वी कैन से दैट इट विल गिव एक्सेस टू मैनी कंट्रीज़ टू द सी पोर्ट ऑफ ग्वादर and give them benefit of easy and cheap trading route. Okay. Okay, next question is what is the importance of Gwadar Port located on the map of Pakistan? You know, we've already discussed that Gwadar is very important because it is, first of all, it is located in the Arabian Sea, which is the main oil trade route, and it is located in and as far as the location is concerned, it is located in the on the southwest of Pakistan, right? It is very important because it is located on the main trade route of oil, right? Assalamu alaikum.
अभी हम करेंगे जी आपकी चैप्टर 11 की लर्निंग चेक्स जो कि पेज 73 पे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स पॉपुलेशन, population density, population distribution and migration. राइट हम इसकी डेफिनेशन सबकी बारी बारी देखते हैं. राइट जी तो फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन and migration. The first thing is population. Population is the total number of people living in an area, town, city, province, country, or the world. You see, population can be of a area, of a town, of a city, of a province, country, or the world, right? Next is the population density. Population density, the average number of people living in an area of 1 square kilometer is called density of population of that area. 1 square kilometer is the yard basic measuring tool of the population density. That how we do we measure the population density? How dense is the population? Then we take the average number of people living in an area of 1 square kilometer is called the density of population of that area. Then is population distribution. The pattern of where people live is called population distribution. The pattern of where people live. The pattern of where people live is called population distribution. The next and the last is migration. Migration means it is the movement of people from one place to another. Movement of place from one place, movement of people from one place to another. Once they move permanently from one place to another place, it will be more appropriate. If you want, you can uh, say it is the permanent move of the people from one place to another. It will be okay even if you write it is the movement of people from one place to another, but it will be good if you write that it is the permanent movement of people from one place to another. Okay, the next question, it is very simple. Why is the population density not the same in all the provinces of Pakistan? Population density is different because people like to live in different places for different reasons. The reasons, I think this question will answer will be enough, but if you want to explain more, you can have you can say that people like to live in different places because of their jobs, because of because of the atmosphere of that area, or in fact it is the liking of the people or the requirement of the people because of which they like to live. So it's very simple that if you write the population density is different because people like to live at different places for different reasons. I think this question, this answer should be enough, but you can have a different answer, but this is just a guideline. Okay. Then is look at the map of population distribution on page 72. Locate the densely populated cities of Pakistan and list them in your notebook. I'll give you two maps, and with the help of that you can just locate, and then you can note down the cities which have bigger population in Pakistan. There are so many cities starting from Peshawar, Kohat, Nushaira, Rawalpindi, um, Jhelum, Gujarat, Gujranwala, Lahore, Okada, and so on and so forth. You can write so many cities. I'll just give you two maps, and with the help of that, you can just write down, and then you'll remember. Okay. First is this map, which is given in your book. This gives you the population density map of Pakistan of 2017. This red, if you see this red, gives you the population density. This is the highest density, right? Over 800 people living in 1 kilometer. And then these places, the way I said,
These are the places in Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar, Nowshera, Kohad, etc. And these are the places like Islamabad and going on to Jhelum, Gujarat, Lahore, and up to Karachi, right? So this is another map that I'll give you, and if you want, you can take the help of this map, and then you can say that these are the cities. If you can remember, many cities you can remember which are having bigger population. These are most of the cities, big cities in Pakistan have been given in this map. You may like to have this map, and you can just note the name of the cities. Okay. Okay, now going over to the next question that list the problems from our overpopulation in Pakistan. We have to know that what are the problems in Pakistan because of too much of population or the overpopulation. Okay, I'll give you a few of the problems. If you can remember even these problems, that your answer will be good enough. Problems by the overpopulation. That first is basic necessities like food, clean water, housing, sanitation, hygienic living conditions are not available to everyone. Then less people have chances of employment, and then migration to big cities. You see, if people will start migrating from villages to the big cities, then there will be no agricultural, there will be no people to do the agricultural work, and then we will be having shortage of food. So these are the basic problems of the because of the overpopulation, and if so many people come from villages to the cities, then cities are overpopulated and they are congested, and there are so many problems that increase. Okay, so if you can just remember these three, that will be good enough answer. Okay. Next is, so now we go to the next part, which is the filling the blanks. In fact, these are not simple words that you will be writing here. There will be a few parts of sentences that you will be writing here. This just to give you a hint. You may even differ from what answers I am giving, but this is just a hint, and I think that will be good enough because I have consulted your notes, sorry, and the textbook, and I think this will be good enough. Let's see if you like it or not. A census is what? A census is a method for counting the people. A method for counting the people living in a country. Right? It's important to have census because it gives information for planning. It is important to have census because it gives information for planning. It gives information to whom? It gives information to the government for planning. Okay. The rate of population growth in Pakistan is high because people in villages want to have more helping hands. They want to have more members of their family so that they can, the extra people or the more people can help them in the farms or looking after their animals. And other is the internal migration, that migration from villages to the cities. Then is a thinly populated area is one. What do you think? What is a thinly populated area? It's simply it is a thinly populated area is a place where number of people living in 1 square kilometer is less. So we'll write that number of people per square kilometer is low. A densely populated area is where number of people per square kilometer is high, and density of population is measured by number of people per square kilometer, right? With this we come to the end of this exercise. I hope it has given you fair answers. If you like our videos, then you can subscribe us, or if you have subscribed us already, then you can like us, and you may tell your friends कि जी वो भी आएँ इसमें हमारे ज्वाइन करें हमें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और हमें भी सवाब मिल सके. अल्लाह हाफिज़.